Assalamu alaikum. Friends, how are you doing? May Allah, the Almighty, keep you hale, healthy, and happy. May He bless you all with long and prosperous life. I am Gayur Ahmed, and this lesson is for 6th class, subject English. Lesson, The Friendly Mongoose. Dear friends, it is a short story and has been taken from the Panchatantra. It is the story of a farmer, his wife, and their pet. Due to misunderstanding and enrage, the farmer's wife killed the pet, who actually had saved the life of their son. In this lesson, we will see how and why this happened. Friends, I'll first read the story for you in English. Then I'll try to tell you this story in Urdu. And after that, we will be discussing the content in little more detail, along with some points regarding language work and grammar. So, let's open our books and go to page number 4. Ready? Okay, here goes the story. Dear children, once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. "We must have a pet," the farmer said to his wife one day. "When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion." His wife liked the idea. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. "It's a baby mongoose," said his wife, "but soon will be fully grown. He will be a friend to our son." Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. One day, the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Picking up the basket, she said to her husband, "I'm off to bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose." "You needn't be afraid," said the farmer. "The mongoose is a friendly animal. It's as sweet as our baby, and they are the best friends, you know." The wife went away, and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her, as was customary. The farmer's wife took a look at the mongoose and screamed, "Blood!" She cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. "You wicked animal! You killed my baby!" She screamed hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. The baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake, torn and bleeding. In a flash, she realized what had happened. She ran out, looking for the mongoose. "Oh, you saved my child! You killed the snake! What have I done?" she cried, touching the mongoose, who lay dead and still, unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose.
Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him. Dear friends, the moral of the story is think before you act. We will discuss it a little more later on. For now, I'll try to tell you this story in Urdu. प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। उनका एक छोटा सा बेटा था जिससे वो बहुत प्यार करते थे। एक दिन किसान ने अपनी बीवी से कहा, हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक साथी, एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों न हम एक अच्छा सा प्यारा सा जानवर पालें जो हमारे बच्चे का दोस्त बनेगा। बच्चों, किसान की बीवी को ये बात बहुत पसंद आई। तो दोस्तों, एक शाम किसान घर वापस आया तो वो अपने साथ एक छोटा सा नेवला भी ले आया, जिसे देखकर उसकी बीवी ने कहा, ये तो छोटा सा नेवले का बच्चा है। खैर कोई बात नहीं, ये बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा और हमारे बच्चे का दोस्त बनेगा। दोस्तों, दिन यूं ही गुजरते रहे और ये दोनों बच्चे बड़े होते गए। 5-6 महीनों में ही नेवले का बच्चा भरपूर और मुकम्मल नेवला बन गया। 2 चमकती हुई आंखों और झाड़ी के जैसी दुम वाला खूबसूरत जानवर। जबकि किसान का बेटा अभी शीरखार बच्चा ही था। वो अभी अपने पालने में सोता और रोता और सोता रहता था। तो प्यारे बच्चों, हुआ यूं कि एक दिन किसान की बीवी कुछ खरीदारी करने बाजार जाना चाहती थी। उसने बच्चे को दूध पिलाया और उसे पालने या झूले में सुला दिया। उसने टोकरी उठाई और अपने शौहर से बोली, मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चा अंदर सो रहा है, ज़रा उस पर नज़र रखना। दरअसल मैं उसे नेवले के साथ अकेला छोड़ना नहीं चाहती, आखिर वो जानवर ही तो है। तो इस पर किसान ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये नेवला तो बड़ा दोस्त परवर जानवर है, ये भी तो हमारे बच्चे जैसा प्यारा है, और तो और ये दोनों एक दूसरे के दोस्त भी हैं। बहरहाल किसान की बीवी बाजार चली गई और प्यारे बच्चों, घर में किसान के करने को चूंकि कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न वो पास ही की अपनी खेतों को नजर मार आए। और बच्चों, क्या हुआ कि वापसी पर किसान को उसके कुछ दोस्त मिल गए और उनके साथ गपशप में कुछ ज्यादा ही देर हो गई और वो खासी देर तक घर वापस न आ सका। इसी दौरान उसकी बीवी खरीदारी यानी शॉपिंग करके घर वापस आ गई। उसकी टोकरी ग्रोसरीज यानी पिंसारी के सामान से भरी पड़ी थी। घर पहुंचकर उसने नेवले को घर के बाहर बैठे हुए पाया, जैसे उसे उसी का इंतजार हो। नेवले ने जैसे ही मालिकन को देखा तो मामूल के मुताबिक वो उसका खैर मकदम करने, उसका इस्तकबाल करने उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही किसान की बीवी ने नेवले को देखा तो उसकी चीख निकल गई, खून! वो इसलिए क्योंकि नेवले का मुंह और पंजे खून से लथपथ थे। अरे ओ बदजात, तूने मेरे बच्चे को मार डाला! वो हिस्टेरियाई अंदाज में चिल्लाई। उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से ने उसे अंधा बना डाला। और प्यारे दोस्तों, उसने किरियाना से भरी टोकरी अपनी पूरी कुव्वत से नेवले पर दे मारी और अंदर अपने बेटे के झोले की तरफ भाग खड़ी हुई। दोस्तों, अंदर पहुंचकर वो क्या देखती है कि उसका बेटा अपने पालने में मस्त सो रहा था, लेकिन फर्श पर एक बड़ा काला सांप मुर्दा पड़ा था। वो उधरा हुआ और लहू लहान था। एक लम्हे में उसे इस बात का इदराक हुआ कि असल में हुआ क्या है। वो बाहर की तरफ दौड़ पड़ी और नेवले के पास पहुंचकर वावेला करने लगी और ज़ारो कतार रोने लगी। वो चिल्लाने लगी, अरे तूने तो मेरे बेटे की जान बचाई, तूने तो सांप को मारा था, ये मैंने क्या कर दिया, अरे ये मैंने क्या कर दिया। वो नेवले को इधर उधर छूती रही और रोती रही, लेकिन नेवले बेचारे को इसकी क्या खबर, वो बेचारा तो मरा पड़ा था। प्यारे दोस्तों, किसान की बीवी ने जल्दबाजी में और गुस्से में जो कुछ किया वो बहुत ही नुकसानदेह साबित हुआ और पछतावे का बायस बना।
وہ مرے پڑے نیولے کی طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھتی رہی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ نیولا دوبارہ زندہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی اثنا میں اس نے اپنے بچے کی رونے کی آواز سنی اور اسے دودھ پلانے اندر چلی گئی۔ تو پیارے بچوں، کیا بتا سکتے ہیں کہ اس کہانی کا مورل کیا ہے؟ یعنی اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی نا کہ ہمیں جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے اور نہ ہی غصے کی حالت میں کوئی کام کرنا چاہیے۔ اس سے نقصان پہنچتا ہے اور بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ و بچار کرنا چاہیے، اس کے فائدے اور نقصان کو سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ تھنک بیفور یو ایکٹ۔ پیارے ساتھیوں، آئیے اب ہم کنٹینٹ کی ذرا تفصیل میں تشریح کریں اور زبان اور گرامر کے کچھ نقطوں کی وضاحت کریں۔ فرسٹ پیرا، پیج نمبر 4۔ Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. "We must have a pet," the farmer said to his wife one day. "When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion." His wife liked the idea. Friends, this para introduces the two main characters and gives a hint to the third one also. The two important characters are the farmer and his wife. جی ہاں، دو اہم کردار جن سے ہمیں اس ابتدائی اور تعارفی پیراگراف میں ملایا جاتا ہے وہ کسان اور اس کی بیوی ہیں۔ تیسرے کردار کا ذکر اگلے پیرا میں آئے گا۔ بہرحال کسان کے میاں بیوی کا ایک بیٹا تھا اور وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ The farmer once told his wife that they must have a pet for their only son because he may need a companion as he grows up. His wife liked the idea of having a pet as companion of their son. دوستو، کسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کا بیٹا جب بڑا ہوگا تو اسے ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہوگی، اس لیے کہ وہ ایک اچھا سا پیارا سا جانور پالیں جو ان کے بیٹے کا دوست بنے گا، اور اس کی بیوی کو یہ بات بہت پسند آئی۔ Now friends, look at these words. Lived, loved, said, grows, and liked. These are all verbs. Lived is the second form or past tense form of live. Loved, that of love. Said, that of say. And liked is the second form of like. While grows is the present tense third person singular form of grow. But friends, do you know what a verb is? And do you have any idea about the forms of these verbs? I mentioned present tense form, past tense form. Any ideas? Anyway, let me tell you that verb is a part of speech, perhaps the most important of the 8 parts of speech. It is a word which shows an action, occurrence, event, or a mode or state of being. In addition to this, a verb has a time reference. That is, it also shows when the action takes place, such as past, present, or future. And in case of actions, it also shows the state of completion or otherwise of the action. To account for all these aspects, verbs take different forms, or we can say a verb changes its form with the change in the time of its occurrence and the state of its completion. My dear friends, that is all for today. We will continue with the same lesson in our next class. Till then, it is goodbye and Khuda Hafiz.